हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री का 12 चैप्टर प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट है शी टूक द चार्ज ऑफ द इंडोर एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर अहिल्याबाई होळकर। सेकेंड, द मोस्ट कैपेबल एंड ब्रेव मैन इन द भोसले फैमिली ऑफ नागपुर। आंसर रघुजी भोसले। Third, he reinstated the emperor on the throne of Delhi. Answer Mahatji Shinde. Fourth, he managed the politics in South. Answer Nana Padmanis. सेकेंड क्वेश्चन से अरेंज क्रोनोलॉजिकली। तो सही आंसर है फर्स्ट, मराठा डोमिनेंस ओवर उड़ीसा। सेकेंड, द ब्रिटिश फ्लू द यूनियन जैक इन पुणे। थर्ड, द बैटल ऑफ आष्टी। थ्री है राइट ब्रीफली। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट है द वर्क डन बाय अहिल्याबाई होळकर। आंसर फर्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ खंडेराव होळकर एंड शॉर्टली thereafter the death of मल्हारराव होळकर, अहिल्याबाई होळकर, the wife of खंडेराव, assumed the reins of the Indore administration. Second, she able rule for 28 years brought peace and order to her kingdom, made her people happy and enhanced the prestige of the Marathas in the north. Third, she undertook many activities for the welfare of her subjects, such as digging wells for farmers, encouragement to trade and industry, and bringing more land under cultivation. Fourth, she built dharmashalas, temple, ghats, mudds, and made provision for drinking water in 4 quarters of India. Fifth, she looked into judicial matters personally and dispensed justice. She was a generous person and an excellent administrator. Second, the valor shown by Mahatji Shinde. Answer Mahatji Shinde was a brave general and a astute statesman. Second, realizing the guerrilla tactics of warfare would not be suitable for the warfare in the lands of the north, he trained his army and modernized his artillery under the guidance of the Boingue, a French military expert. Third, he subdued the Rohillas, the Jats, the Rajputs, and the Bundelkhand. Fourth, he kept the British under restraint. बाकी का आंसर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड है द मराठा रूल इन गुजरात। आंसर इज ड्यूरिंग द 10th century the native Chalukya dynasty come to power. Later in the 18th century, Gujarat came under control of the Maratha Empire, who dominated the politics of India. The British East India Company wrested control of much of Gujarat from the Marathas during the Second Anglo-Maratha War. Fourth, discuss the reason behind the end of Marathas rule. Answer: after the death of Mahatji Shinde and Nana Fadnavis, the Maratha power began to weaken. Second, Bajirao II, the son of Raghunath Rao, was the Peshwa at that time. He did not have leadership qualities and had many vices. Third, he was unsuccessful in uniting the Maratha Sardar, and the internal conflict between Maratha Sardar weakened their power. बाकी का आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।